Hello everyone, I'm Dr. Surangna and I welcome you to yet another episode of Women Health series by Lifestyle Speaks. I have always said that we women should follow a proper diet and exercise routine along with going for regular health checkups for our own good health. But sometimes we may experience certain symptoms or certain signs which we may be experiencing very frequently or which may be lasting for many days. And all of these could be warning signs of a serious health issue. And that is why it is very important that we women learn to observe our body and we understand our body. And whenever we face these signs and symptoms, we do not ignore them for our own good health. आज का वीडियो बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में है जो अगर हम लेडीज़ में हों तो हमें सावधान रहने की ज़रूरत है और उनकी जांच कराने की ज़रूरत है ताकि हमें पता चले कि वो कोई सीरियस इश्यू तो नहीं है। चाहे हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो अपने जीवन में, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत और अपनी बॉडी का बहुत अच्छे से ख्याल रखें और ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स को तो हम बिल्कुल भी इग्नोर करें और तेज़ी से एक्शन लें। सो लेट अस नो ऑल अबाउट दीज रेड फ्लैग्स एंड अर्ली वार्निंग साइंस दैट वी वुमेन नीड टू लुक आउट फॉर। एंड सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो शुरू करते हैं। All of us women have different energy levels. But if you feel too fatigued or too tired, which starts affecting the pace of our life, it could be something else. We women generally put the blame or reason for our fatigue on something else or the other if we experience it. But if we experience fatigue and tiredness, which does not get better with proper sleep and rest, and it starts to affect our personal as well as professional life, then it should be checked. तो हम लेडीज़ को थकान तो होती है, तो अगर हमें बहुत ज़्यादा थकान हो और हम अपने डेली के कार्य नहीं कर पा रहे हैं और हमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं और बहुत दिनों से चला जा रहा है तो हमें उसको चेक करा लेना चाहिए क्योंकि वो कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है और बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से हमें बहुत ज़्यादा थकान हो सकती है। सो फ्रीक्वेंट फैटीग कुड बी अ साइन ऑफ मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक अनीमिया, chronic fatigue syndrome, or some form of cancer or hormonal imbalance. It is very important that we women pay attention to our breasts on a routine basis to check out for any lumps or to see if there are any changes in the breast shape or size, nipple discharge, rashes which does not go away with time. Because all of these could be warning signs of breast cancer and hence we should never ever ignore them. तो हम लेडीज़ को रूटीन बेसिस पे अपने ब्रेस्ट को चेक करना चाहिए ये देखने के लिए कि उनमें कोई लम्प्स तो नहीं है, उनकी शेप और साइज़ सही है या उनमें कोई रैशेस तो नहीं है जो ऐसे हैं जो बहुत टाइम से हैं पर जा नहीं रहे हैं, क्योंकि ये सब इंडिकेशंस हो सकते हैं कि हमें ब्रेस्ट कैंसर है। तो इन्हें हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और हमें जल्द से जल्द जाकर उनकी जाँच करा लेनी चाहिए। इफ़ यू नोटिस abnormal bleeding, that is vaginal bleeding between your menstrual cycle or after menopause, then you should surely schedule a visit with your doctor because it could be sign of a serious health issue. तो अगर आपको abnormal bleeding होती है, जो कि bleeding होती है हमारे 2 menstrual cycle के बीच में अगर होती है, कभी भी होती है unusual टाइम पे या menopause के बाद, तो आपको एक डॉक्टर से अपनी जांच करा लेनी चाहिए क्योंकि कोई serious health issue हो सकता है. It could be a sign of gynecological cancer like cervical, ovarian or uterine cancer. And it could be also due to many other health conditions. Other than that, if you experience unusually heavy or painful periods which are very much out of the ordinary, then that could also be sign of different gynecological problems like uterine fibroids or endometriosis. साथ में अगर आप एक्सपीरियंस करते हो आपको बहुत हैवी पीरियड्स हो रहे हैं, बहुत दर्दनाक पीरियड्स हो रहे हैं, ये भी कुछ गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है जैसे कि फाइब्रॉइड्स और एंडोमेट्रियोसिस। Unexplained weight gain means you're gaining weight even despite following a healthy lifestyle, diet or exercise. And this could be a warning sign of thyroid gland issues or heart failure. On the other hand, unexplained weight loss means you're losing weight even without trying for it or because of no other reason. And this could be a sign of some form of cancer or hypothyroidism. तो 2 चीज़ें होती हैं, एक बहुत ज़्यादा वेट गेन होना जो समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आपको वेट गेन हो रहा है जबकि आप अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हैं और एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, फिर भी आपका वेट गेन हो रहा है। और दूसरा है वेट लॉस
बहुत ज़्यादा वेट लॉस होना, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको इतना ज़्यादा वेट लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि आप ऐसा तो आप कुछ कर नहीं रहे हैं कि आपका वेट लॉस बहुत हो रहा है या कोई और रीज़न नहीं है। तो अगर ये दोनों चीज़ें हो तो आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये कोई सीरियस हेल्थ इशू की वजह से हो सकता है। If your breathing gets uncomfortable or you experience shortness of breath or you find it hard to catch your breath and this just gets worse with time, this could be an early warning sign of many serious health issues. तो अगर आपको सांस लेने में दिक्कत आती है या आपकी सांस फूलने लगती है तो आपको इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये कुछ हेल्थ इशू की वजह से हो सकता है. It could be a sign of dyspnea, which is caused by cancer or tumor or stress. And it could also be a sign of heart attack. Like I've always said, we women are more prone to developing heart attacks or heart-related problems. But we women generally do not face the classic symptom of heart attack, which is pain or pressure in the chest, and we experience more of breath shortness, which could be an indication of heart attack. And that is why we should never ever ignore this symptom. मैंने हमेशा बोला है कि हम लेडीज़ को हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और अगर हमें सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो वो एक वार्निंग साइन हो सकता है हार्ट अटैक के लिए. तो इसलिए आपको ये सिम्टम कभी भी इग्नोर नहीं करना है. If you feel sudden numbness or weakness in your hands and feet, then this could be a sign of stroke. Other symptoms of stroke are confusion, difficulty sleeping, and walking. However, if you feel numbness and weakness in your hands and feet, which just gets worse with time, it could be due to bulging disc in your vertebrae, which is putting pressure on your nerves. अगर आपके हाथ और पैर आपको सुन्न महसूस होते हैं या आपको उनमें कमजोरी फील होती है तो ये वार्निंग साइन हो सकता है स्ट्रोक का या फिर बल्जिंग डिस्क का. तो अगर आपको ये सिम्टम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो रहा है या ये बेटर नहीं हो रहा है तो आपको इनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए और आपको इसकी जांच करा लेनी चाहिए. Changes in your skin or the appearance of new spots in your skin or changes in the shape, size, color of your moles and freckles, maybe the bleeding of your moles, all these could be early warning signs of melanoma, which is a deadly skin cancer, which can be treated if it is detected at an early stage. So it is very important that we do regular self exams of our skin, just like we do breast exams, so that we can know when something is not right. तो अगर आपको अपने स्किन में कोई भी चेंजेस दिखते हैं, जैसे कोई नए स्पॉट्स आ जाते हैं, नए रैशेस आ जाते हैं, या जो आपके तिल हैं उनकी शेप, साइज या कलर चेंज हो जाते हैं, या उनमें से खून निकलना शुरू होता है, तो ये सब वार्निंग साइंस होते हैं मेलानोमा के, जो एक बहुत ही डेडली स्किन कैंसर है, पर ट्रीट हो सकता है अगर हम उसको अर्ली स्टेज पे उसे डिटेक्ट करें. इसलिए अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स एक्सपीरियंस करते हो या आपको ऐसा लगता है ये चीज़ वर्स हो रही है विद टाइम, तो आप उसको बिल्कुल इग्नोर ना करें. If you notice swelling in your calf areas, in your legs, along with pain and painful tenderness, then this requires immediate action. This could be because of developing of blood clots in a side vein, which is called as deep vein thrombosis. And this is a very dangerous condition because if the blood clots break down, it can travel to our lungs and it can block an artery there, leading to pulmonary embolism, which is very fatal. Because that basically blocks oxygen supply in our lungs. And that is why if you experience leg pain with swelling, you should get it checked early. तो अगर आपको अपने लेग्स में पेन या स्वेलिंग हो या अपने हमारे जो लेग के पीछे वाले पोर्शन में पेन और स्वेलिंग हो तो आपको उसको जल्द से जल्द चेक करा लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे वेन्स में ब्लड क्लॉट के डेवलपमेंट के वजह से हो सकता है. और ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है, क्योंकि अगर ये सही टाइम पे ट्रीट नहीं हो तो ये जो क्लॉट्स हैं ये ब्रेक डाउन हो सकते हैं और हमारे लंग्स तक पहुंच सकते हैं. वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आर्टरी को ब्लॉक कर सकते हैं और ऑक्सीजन सप्लाई को भी अफेक्ट कर सकते हैं, जो बहुत ही सीरियस होता है. Most of us women, we feel bloated when we eat or drink too much or around the time of a month. But if we experience too much bloating, where we also experience difficulty in eating and we feel heavy most of the time, then this could be something serious like ovarian cancer, or it could also be because of irritable bowel syndrome. हम लेडीज में ब्लोटिंग काफ़ी कॉमन है. जब हमारे पीरियड्स स्टार्ट होने वाले होते हैं उससे थोड़े दिन पहले से हमें ब्लोटिंग फील होती है, या अगर हम कुछ ज़्यादा खा पी लें तो भी हमें ब्लोटिंग होती है. बट अगर हमें बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो रही है जो बिल्कुल सही नहीं हो रही और हमारे खाने पीने में भी हमें बहुत दिक्कत हो रही है, हमें बहुत हैवी फील होता है, तो ये हम इन साइंस को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि या तो ये ओवेरियन कैंसर की वजह से हो सकता है या फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की वजह से भी हो सकता है.
Headaches are common, but frequent severe headaches, which just come suddenly and it's like one of the worst pains you have experienced, could mean something serious like strokes or tumor. And so you should never ignore them. तो हेडेक होना कॉमन है. आपको बहुत फ्रिक्वेंटली सर में दर्द होता है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है कि वो ऑल ऑफ अ सडन आता है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है कि आपने ऐसा पेन कभी फील नहीं किया हो, तो आप इसे बिल्कुल इग्नोर ना करें क्योंकि ये कोई सीरियस इश्यू हो सकता है. We all know our body is better than anybody else. So if you feel that something is not right, just do not push it out of your mind. Instead, always follow your intuition so that you can detect a health problem at an early stage before it becomes a serious health issue. So that's it for today. I really hope you find today's video useful and you all take into consideration the early warning signs and symptoms which I've talked about in today's video, because that is very, very important. We cannot ignore them. If you found today's video useful, don't forget to give this video a like. Love your life and make it charismatic. See you again next time. Stay safe, stay healthy, keep smiling and keep watching Lifestyle Speaks.